Hello, I am Abhishek. In this video, we are going to discuss the reasoning section of JIPMAT 2021 paper. So let's start with the first question. The first question was based on number series. The series was given to us 17, 19, 15, then we have 23, 7 and 39. We need to find the next number. Now this question was quite simple. See, the difference over here is of plus 2, then minus 4, then plus 8, then minus 16, and then plus 32. So these numbers are basically getting doubled. The difference is getting doubled with an alternate sign. So initially it was plus 2, then minus 4, plus 8, minus 16, plus 32. So next should be negative sign, and double of 32 is 64. So minus 64 should be the next term. 39 minus 64 makes it minus 25. So minus 25 is the correct answer. Second question. Okay, again based on series. So in this question, an alphabet series is given with one term missing. Choose the correct option that will continue the same pattern. So see, an easy approach for such question is simply replace the alphabets by their position in alphabet series. So basically M comes at position number 13, O at 15, Q at 17. So we have 13, 15 and 17. अब इसको रिलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है when it comes to numbers. S U W, S come at 19, U at 21, W is 23. So now we can see that this is a series. Plus 2 हो रहा है सब में. Next is Y, पर यहाँ पर A आ चुका है. Then C. So Y is basically 25. A is 1. But then if we consider ABCD alphabet series in cyclic order, so Z which is 26, and after Z it will be A again. Right? So that makes it 27 also. So A can be considered as 1 as well as 27. Right? C can be considered as 3 as well as 29. So 1, 3. So after that, if we continue the same pattern, we will have 5, then 7 and 9. Now we know that 5 is E, 7 is G and 9 is I. So E, G, I must be the correct answer. Option second. Moving to next question. Okay, in this question, a letter series is given where some of the letters are missing. The missing letters are given in the order as one of the options below it. Choose the correct option. So इसमें क्या करना है? यहाँ पर एक कोई पैटर्न बन रहा होगा. We need to check for the pattern. How to solve such question? The best way is to use options. What I will do is I will simply replace first options पे जो भी है उनको replace कर देता हूँ यहाँ पे. So A, and at first blank I will substitute A. Second पे B, third and fourth C and C. Now मैं इसको पढ़ के देखूंगा कि कुछ लॉजिकल पैटर्न मिल रहा है क्या. Now A A C B B A दो दो के पेयर में कुछ लॉजिकल नहीं दिख रहा है. If we take pair of 3, तो A A C B B A C C A C C B again कुछ लॉजिकल नहीं दिख रहा है. Right? तो यहाँ से मुझे कुछ भी लॉजिकल नहीं मिला. If I go for second option, then we have A C B A. यहाँ पर हम चेक करते हैं तो we have AAC or C, then we have CCB, ABC. Again, things are illogical. So if I move to the correct option, that is BCBA. और ये correct क्यों है? It will tell you the reason. See, if we take the first three letters, so that is combination of three different alphabets A, B and C. Again हम next three लेते हैं तो उसमें again we have a combination of these three different alphabets A, B and C. Again next three में भी BCA, again a different combination, and then ACB. तो चारों में हमें different combination मिल रहा है, basically rearrangement मिल रहा है ABC का. Right? So this option is correct one, option 4. Moving to next question. Again based on series, so there was a lot of questions from series. Right? So we have 210, then 380. Now similarly we are given 182 and we need to find an analogous pair. यहाँ पर क्या number आने वाला है that we need to find. Now see, this 210 can be written as 14 into 15. This can be written as 19 into 20. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 14 into 15 था, फिर 14 में plus 5 कर दिया गया और 15 में भी plus 5 कर दिया गया है, right? So we go by the same logic. So this 182 is 13 into 14. So if I add 5 to 13, that makes it 80, and into जब हम 14 में 5 ऐड करेंगे that makes it 19. So 18 into 19 must give us the correct answer. So 18 into 19 is basically 342. The correct answer to this question is 342.
right? Next question, again based on analogous pair. So, in some sense, drill is related to bore. We need to find how, in the exact sense, is C related to which of the following options. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. Now drilling basically is a process of making holes. You must be knowing this, right? And bore is basically a deep hole. उसे हम bore भी कहते हैं, as we use in boring, right? So उसी तरह sieve. Now sieve is basically a process to separate, unwanted particles from the wanted ones. So basically हम जिसे हिंदी में छलनी कहते हैं वो, right? तो छलनी is, this is the process. और इसके थ्रू हम करते क्या हैं? इसके थ्रू हम अनवांटेड पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं, राइट? नाउ लेट अस मूव टू द ऑप्शन. नाउ व्हाट इज pry? Pry is basically it is to trying to find out about other people's private affairs, right? So this is not related to this one. Thief से related नहीं है ये, right? Rinse is basically washing something to remove dirt. तो जब हम वॉश करते हैं उसे रिंस कहते हैं. तो दिस इज अगेन नॉट रिलेटेड टू सीव. सिफ्ट. नाउ सिफ्ट इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ फिल्ट्रेशन, यू कैन से. सिफ्ट में क्या होता है, हम फिल्टर करते हैं, एक तरह से जो इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग करते हैं. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. थ्रेश इज समथिंग अगेन अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ओनली, बट इन दिस प्रोसेस हम जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे एक स्पेशल टूल से हिट करते हैं जिसके थ्रू 10 पार्टिकल बाहर आ जाते हैं. तो अगेन वो सीप से रिलेटेड नहीं है. तो बेसिकली सिफ्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question there are 4 options. 3 of them are alike and one is different. We need to find the odd one out. Now the options are December 21, Feb 21, March 21 and November 21. Now see, सबसे पहले जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है वो आता है कि फेब आंसर हो जाना चाहिए बिकॉज फेब है 28 डेज. बट देन यदि हम प्रॉपर्ली चेक करें, इन दिसंबर वी हैव 31 डेज, मार्च में वी हैव 31 डेज, बट नवंबर वी हैव 30 डेज ओनली. तो यदि यहाँ पर भी 31 होता तो हम कह सकते थे कि फेब इज ऑड वन आउट, बट यहाँ पर 31 नहीं है, हियर इट इज 30. So we cannot say directly that Feb is the odd one out, right? Feb odd one out नहीं है. Then how to find out? Now a simple way to solve this question is you can find out what was the day on 1st of December 2021. Right? When you solve this, you will find that it was Wednesday. Now check for 1st of Feb 2021. Similarly, check for 1st of March 2021 and then for 1st of November 2021. So when you check for these days, you will find that it was Monday on all these 3 months. Feb, May, March, November, it was Monday. But on December, it was Wednesday. The starting day of the month was Wednesday. So this is the odd one out, December 2021. Right? Next question. Now this is the best question of this paper. In fact, this is the only question जो आप कह सकते हैं कि IIM के लेवल का है. Otherwise बाकी सारे questions was quite easy one. Right? तो इस question में क्या दे रखा है समझते हैं. 6 faces of a cube are painted in manner that no 2 adjacent faces have the same color. The 3 colors used in painting are red, blue and green. Red, blue and green, ये 3 कलर यूज किए गए हैं. तो बेसिकली मैंने ये क्यूब बना के दिखाने की कोशिश की आपको 3D में. So we have 6 faces in a cube. Top, bottom, then we have left and right, and then we can say front and back. ये सारे 6 faces होते हैं. जैसे if we talk about this particular figure, so this is right face, this one is right face. तो यहाँ पर जो आ रहा होगा which is not visible, that is left. ये वाला is front, इसके just पीछे जो आ रहा होगा that will be back. ये वाला top है और इसके एकदम नीचे will be bottom. Now it is very much understood कि जो top और bottom होंगे वो identical होने वाले हैं, जो left and right है वो identical होने वाले हैं, right? ठीक है. Now let us move to the question again. क्या है कह रहा है question, वापस समझते हैं. Okay, so the 3 colors used in painting are red, blue and green. The cube is then cut into 36 smaller cubes in a manner that 32 cubes are of one size and the rest of bigger size. And each of the bigger cube has no red side. This is very important information.
जो भी बड़ा क्यूब था उसमें कोई भी साइड रेड कलर की नहीं थी। नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर फर्स्ट। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम पता कैसे करें कि कौन से क्यूब छोटे वाले थे, कहां पर थे, और बड़े वाले क्यूब्स कहां पर थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगेन इस पे फोकस करते हैं। जो बड़े क्यूब्स हैं उनमें कोई भी रेड साइड नहीं है। नाउ मैं अज्यूम करता हूं कि यहाँ पर जो क्यूब्स आ रहे हैं, ये वाले क्यूब्स, इनमें कोई भी रेड साइड नहीं है। तो दैट मीन्स कि जो रेड कलर किया गया है वो राइट वाले फेस पे और लेफ्ट वाले फेस पे किया गया है, क्योंकि तभी जो बीच में हमारे क्यूब्स आ रहे हैं उनकी कोई भी साइड रेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो भी कलर है, टॉप पे जो भी कलर है और जो भी बैक में या फ्रंट पे कलर है, वो तो इन क्यूब पे आ ही आ रहा है। तो इन क्यूब पे कौन सा कलर नहीं आ रहा है? रेड। दैट मीन्स कि रेड कलर था राइट और लेफ्ट हैंड साइड वाले फेसेस पे। नाउ वी हैव 32 सच क्यूब्स। ये एक और हिंट था, ये हिंट था कि वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 32 क्यूब इन टू साइड्स, बेसिकली बिटवीन टू फेसेस। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वी हैव 16 क्यूब्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 16 ऑन राइट हैंड साइड। तो हमें यहां से पता चल गया कि यहाँ पर जो फेसेस पे, इस राइट हैंड साइड वाले फेस पे नंबर ऑफ क्यूब्स है, दैट इज 16 इन नंबर। एंड इफ वी सी दिस पर्टिकुलर फेस, तो दिस इज अ स्क्वायर, तो 4 by 4 का स्क्वायर विल मेक इट 16। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो क्यूब की साइड थी दैट वाज 4 by 4 सेंटीमीटर, राइट। नाउ बीच में जो क्यूब है, बड़े क्यूब हैं, उनमें कोई भी रेड कलर नहीं है, देयर आर 4 सच क्यूब। तो यहां से जब हम इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि सी दिस इज वन ऑफ द बिगर क्यूब, दिस इज सेकंड ऑफ द बिगर क्यूब, ये तीसरा वाला है और एक ऐसा ही पीछे की तरफ होगा, दैट विल मेक इट 4। तो वी हैव 4 सच क्यूब जिनमें कोई भी रेड कलर नहीं आ रहा है, दे आर इन द बिटवीन, you can say that they are sandwiched between these two faces, between two red faces, right। इन दोनों रेड पीसेस के फेसेस के बीच में इनको सैंडविच अपन मान सकते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर वी कैन इजीली फिगर इट आउट दैट द साइड ऑफ द बिगर क्यूब इज 2 by 2। ये जो बिगर क्यूब है ये सारे 2 by 2 के, ये भी 2 by 2 का, ये भी 2 by 2 का, एंड दिस इज आल्सो 2 by 2, ये इनके डायमेंशन है 2 by 2 के। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्यूब्स ओनली हैव one side colored। now we need to find the number of cubes इनका एक ही फेस पे कलर हो। एक ही फेस पे कलर हो, ये कैसे निकालेंगे? लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल erase this thing, then we'll discuss। okay, तो एक ही साइड, we need color on one side only। so okay, so as we have discussed कि इस पे सारे रेड कलर था, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। तो लेट मी लेबल इट। तो ये सारे आई एम यूजिंग R फॉर रेड। तो ये वाला फेस अपना पूरा रेड था, उस पे रेड कलर था। और सिमिलरली द सेम गोज फॉर लेफ्ट फेस एज वेल। लेफ्ट पे भी एकदम आइडेंटिकल फेस है, वहां पे भी सारे क्यूब्स रेड कलर के। लेट अस अज्यूम कि जो टॉप वाला फेस था उस पे ब्लू कलर था, तो मैं ब्लू कलर ही ले लेता हूं। यहां पर इट इज ब्लू, दिस इज आल्सो ब्लू, ये भी ब्लू है, ये सारे ब्लू कलर के हो गए। और ऐसा का ऐसा इसका आइडेंटिकल कॉपी होगा बॉटम फेस, दिस इज टॉप फेस, बॉटम भी एकदम आइडेंटिकल होगा। नाउ थर्ड कलर वाज ग्रीन, so let us assume that this front face was green, sorry, green, this is green, these all faces are green। और इसी का आइडेंटिकल कॉपी होगा द फेस एट द बैक। ये बैक और फ्रंट वाले आइडेंटिकल होंगे, टॉप और बॉटम वाले आइडेंटिकल होंगे, और राइट एंड लेफ्ट वाले आइडेंटिकल होंगे। Now, the question is, how many cubes have only one side colored? तो सबसे पहले हम इन बड़े क्यूब्स की बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा क्यूब हो उसमें दो कलर आ रहे हैं, यहाँ पर ब्लू एंड ग्रीन आ रहा है, इस वाले क्यूब में भी ब्लू एंड ग्रीन आ रहा होगा। सिमिलरली नीचे वाला, और क्योंकि ऊपर वाला आइडेंटिकल है तो सेम। एक भी ऐसा बड़ा क्यूब नहीं है जिसमें सिंगल कलर हो। तो वी नीड नॉट टू काउंट दीज फेसेस, दीज क्यूब, बेसिकली हम इनको काउंट नहीं करेंगे। अब लेट अस मूव टू दीज क्यूब्स। ये वाले जो क्यूब हैं इन पे ब्लू आ रहा है एंड दिस साइड वी हैव रेड कलर, तो ये भी कॉम्बिनेशन होंगे ब्लू और रेड के। और वी कैन से कि हम यहाँ पे देख लेते हैं ना, ये वाले जो क्यूब्स हैं इनको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इस वाले में ब्लू, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इनको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो नीचे वाली रो है, क्योंकि वो टॉप वाली की आइडेंटिकल होगी तो ये भी एलिमिनेट होती है, और जो ये बैक वाली रो है वो भी फ्रंट वाले की आइडेंटिकल होगी तो ये भी एलिमिनेट होती है। तो जब हमने सब कुछ एलिमिनेट कर दिया तो बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ
these 4 cubes only. ये 4 क्यूब्स ऐसे बचे हैं हमारे पास जिनका केवल एक ही फेस पेंटेड है, राइट? बाकी सारी क्यूब्स ऐसे थे जिनपे कोई ना कोई दो कलर आ रहे थे. 4 क्यूब्स वी हैव फ्रॉम हियर, फ्रॉम राइट हैंड साइड फेस, और 4 ही हमारे को लेफ्ट फेस से भी मिलेंगे. सो इन टोटल वी हैव 8 सच क्यूब. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की 3D में फिगर बना के, बट थोड़ा क्योंकि विजुअलाइजेशन पे बेस्ड होता है क्वेश्चन क्यूब पे हमेशा, तो थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे. इस तरह से केवल ये 4 क्यूब बच रहे हैं हमारे जिनपे केवल एक रेड कलर आ रहा है. बाकी आप देखेंगे किसी भी क्यूब को आप चेक कर सकते हैं फिगर में, उसमें एटलीस्ट 2 कलर्स आते हैं, राइट? सो 8 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, very easy one. Which one word cannot be made from the word miraculous? Now see, locus, all the letters of the word locus are present in the word, right? Molar, iska bhi sare present hai. Star is also, each and every letter is present. S is there, we have C, we have A, we have R. So in solace we have E, which is not available in the original word. So this is the answer. Solace is the word which we cannot make from the word miraculous, right? Now next question, question number 9. So if plus means divide, minus means multiply, divide means this, and into means this, then we need to find the value of this expression. So expression is 36 multiplied by 12 plus 4 divided by 6 plus 2 and minus 3. Now first of all, to solve such question, what we need to do is we need to simply, substitute the meaning of this sign. Now the meaning of multiply over here is, multiply means minus. So I will simply substitute the values. So this becomes 36 minus 12. Now plus means divide by 4. See here it is plus means divide. So divide by 4. Then we have divide. Now meaning of divide is plus. So plus 6, plus is again divide by 2, and minus means is to multiply by 3. Now as per the rule of BODMAS, first of all, out of multiplication, addition, subtraction and division, we'll go for division. So we have two divisions over here, this and this. So 36, 12 divided by 4 is 3, plus as it is 6 divided by 2 is 3 again. Now we are done with the division part. Now we'll move to multiplication. So this is 36 minus 3 plus 9. So basically 45 minus 3 is 42 is the correct answer. Quite easy one, right? Next question. Based on comparison, so a statement is given to us. We need to find which of the given conclusion is correct and which one is not. So the comparison is H is greater than P, P is in turn is less than equal to E, E is less than L, L is equal to R is less than V, and then other expression is given which says that F is greater than equal to V. Now an easy approach to solve such question is use similar signs only. If you are using greater sign, then use greater throughout, or in case you are using less than sign, then use the same sign throughout. कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, let me explain it to you. Now see, H is now greater than P, or we can say that P is less than H, right? P H से less है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, H is greater than P, right? H जो है वो P से बड़े है, यहाँ तक मैंने लिख दिया है. Now let us move to P. P is less than equal to E. P जो है वो E से भी छोटे हैं और equal भी हो सकते हैं. But can we compare H and E? See, H is greater than P, और जो E है वो भी P से बड़े भी हो सकते हैं, equal भी हो सकते हैं. But we cannot compare H and E, क्योंकि हमें नहीं पता इनकी क्या वैल्यूज है, राइट? जब भी ऐसा केस आता है, what we need to do is simply, यदि आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो राइट इन द अदर लाइन. आप सेम लाइन में कंटिन्यू मत करिए, आप तो दूसरी लाइन में लिख दीजिए. अब देखिए यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि we cannot compare H and E. Now E is less than L, so yes, we can directly write in this line L and R are equal and R is less than V. Now next information is F is greater than equal to V. So basically V is less than equal to F. उसको भी यहाँ पे हम कंबाइन कर सकते हैं. तो ये दो हमारे स्टेटमेंट है. अब जो भी सेम लाइन में है हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट लाइन में है हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? फर्स्ट कंक्लूजन, F is greater than E. Now see, F is here and E is here, सेम लाइन में है, and yes we can see that F is greater than E is correct. So this is correct, right? H is greater than R,
Now see, H and R are in different lines. We cannot compare them. कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, we cannot comment. So not possible. We cannot conclude about this statement. So the correct answer is if only conclusion 1 is true. Option C. Okay, so next question. Study the information given below and answer the question that follows. There are 4 friends A, B, C, D. One of them is cricketer and studies chemistry and biology. So let me form a table. A, B, C, D. There are 4 friends. यहाँ पर हम उनके सब्जेक्ट लिख लेते हैं, राइट, एंड यहाँ पर हम उनके स्पोर्ट्स लिख लेते हैं, जो भी वो खेलना पसंद करते हैं. So we have A, B, C and D. So A and B play for. अच्छा, one of them is cricketer. कौन है क्रिकेटर ये नहीं दिया गया, but one of them is a cricketer and studies chemistry and bio. तो ये अभी तक हमें पता नहीं है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है. We need to use this information later on. A and B play football. So we can say that कि football A और B का स्पोर्ट है. मैंने F लिख दिया, F for football. Both football players study mathematics. तो इन दोनों का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा. D is a boxer. D is a boxer. तो उसका स्पोर्ट बॉक्सिंग हो गया. One football player also studies physics. Now कौन सा ऐसा फुटबॉल प्लेयर है जो फिजिक्स स्टडी करता है, वो नहीं गिवन है. So let us assume it to be A. मैंने A को assume कर लिया कि one of the football player also studies physics. The boxer studies mathematics and account. Boxer जो है which is D, वो mathematics और accounts पसंद करते हैं. All the friends who study two subjects and each play one of the game. Now see, सब एक ही गेम खेलते हैं. तो क्रिकेट वाला हमारा बचा हुआ है अभी तक. One of them was cricketer, so the only option is C. C plays cricket और उनको chemistry and biology पसंद. Now the question is how many games are played and subjects studied by these 4 friends. Now games we have 1, 2 and 3 different games: football, cricket and boxing. So we have 3 games, so we can eliminate these 2 options. इनमें 2 games दे रखा था, right? And subject, if we talk about subject, so we have maths, physics, chemistry, bio and account. So we have 5 subjects. So the correct answer is 3 games and 5 subjects. Next, blood relation. Q is brother of R. Q is brother of R. अब ये इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ जब blood relation, तो इस तरह से साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं. कई जने प्लस माइनस यूज करते हैं, तो you can understand it accordingly. Q is brother of R. Now see, P is sister of Q. P is sister of Q. तो यहाँ पर मैं P बना देता हूँ. P is sister of Q. T is sister of S and S is daughter of R. S is daughter of R and T is sister of S. तो ये हमारा एक फैमिली ट्री बन रहा है. Who are the niece of Q? Niece of Q are S and T. बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग. L B P means roses are blue. Now these are not in ordered form. इसका मतलब roses का मतलब L है, B का मतलब R है, P का मतलब blue है. इस तरह से नहीं होता है. These are in random form, right? Sick, he means red flowers. P met, he means flowers are vegetables. Now we need to find which word stands for red. Now see, red केवल यहाँ पर अवेलेबल है. इसका मतलब red का जो कोड है वो भी केवल यहाँ पर ही होना चाहिए था. Now he तो यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो he cannot be the code for red. In fact, इन दोनों में flower कॉमन आ रहा है और एक कोड भी कॉमन आ रहा है. That means he stands for flower. Now he stands for flower, so red must be sick. S-I-K. The correct answer is option D, that is sick. Okay, direction sense. Sandhya walks 10 meters towards south. So let this be the starting point. 10 meters towards south. Let me mark the point as A. Turning to left. Now see, her face is downward. So left will be this side. She walks 20 meters. So this is 20 after turning left. And then turns to her right and covers a distance of 20 meters. यहाँ तक उसने 20 मीटर वापस कवर किया. Like this. She turns to right and walks 20. Now again, face is downward. हमारे opposite है. So 20 means यहाँ पर होगा. ये उनका right हो गया. And 20. Now just need to
मेक इट श्योर कि आपने यहाँ पे 20 इतना डिस्टेंस लिया है तो सेम डिस्टेंस आपको लेना होगा, वो इन लाइन आना चाहिए, राइट। व्हेन शी टर्न्स टू हर राइट एंड मूव्स 10, और दिस वाज 20 और उन्होंने 10 मूव किया है तो इधर तक मूव किया है, दिस इज 10। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज शी मूविंग? शी इज मूविंग टुवर्ड्स अप डायरेक्शन, अप इज बेसिकली नॉर्थ, अप इज कंसीडर्ड एज नॉर्थ, so the answer to this question is north, question number 14, fine. Next question. Okay, based on Venn diagram, we need to find the relationship between tall men, black-haired people, and Indian. Now see, tall men जो होते हैं वो black-haired हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जो tall men होते हैं वो Indians हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और जो black-haired people हैं वो भी Indians हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। So basically it should go like this. This is tall man, black hair, and Indian. इनका intersection हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Now let me explain all the areas to you. These are tall men जो ना तो इंडिया से belong करते हैं, ना ही black hair वाले हैं। These are black haired people जो इंडिया से नहीं है और tall भी नहीं है। These are Indians जो ना तो black haired है ना ही tall है। Now these are Indians जिनका black hair है पर वो tall नहीं है। These are Indians जो कि black haired भी हैं, tall भी हैं, right? And they belong from India, obviously. And these are black-haired people who are tall men, and these are Indians who are tall but not black-haired. तो इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है इन्हें, और the correct answer is option D. So सारी possibilities को कवर कर रहा है। Next question, based on rank determination, Chandrika is 8 rank ahead of Jaya. Jaya, who ranks 26 in the class of 42. The rank of Jaya is 26 from the top in class of 42 students. And Chandrika is 8 rank ahead. Now ahead here means कि अच्छी रैंक पर है, अच्छी रैंक पर है and 8 पोजीशन पे है जया से पहले, तो Chandrika is here, and the position of Chandrika must be then, see यहाँ पे यदि इसकी 26 पोजीशन है तो यहाँ पर उनकी पोजीशन must be 18, right? There is a difference of 8 ranks among these two students. Now question is, what is Chandrika's rank from the last? We need to find rank of Chandrika from here. So we have 42 students. उसमें से चंद्रिका तक यदि हम टॉप से काउंट करते हैं तो 18 स्टूडेंट चले गए, तो we have 24 स्टूडेंट जो कि चंद्रिका के बाद में बैठे हैं। Now there are 24 students after Chandrika. So Chandrika की rank then must be 25. So the correct answer to this question is 25. Fine. So this was the first part of this video. I will cover the rest of the questions in next part. I hope these questions are clear to you. Thank you.